सो द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, तो उनमें एंटीजन्स क्या होगी, बोथ प्रेजेंट होगी, एंटीजन ए भी होगी, एंटीजन बी भी होगी. और लास्ट वन इज़ अ ब्लड ग्रुप ओ. ठीक है. सो इन ब्लड ग्रुप ओ द पर्सन हैविंग नन ऑफ ए एंड बी एंटीजन्स. ठीक है, उनमें ना एंटीजन्स ए प्रेजेंट है ना एंटीजन्स बी. Both antigens A and antigen B absent. Then the person having a blood group A, blood group O. Like so, I have to draw a diagram of blood ABO blood group. If a person having a blood group A, then this is a red blood cells. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ये देखिए ब्लड ग्रुप बी. दिस इज द रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है ना, लाइक एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीजन ए भी है, और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. सो blood group A, blood group B, and the blood group AB. Or last one is a blood group O. Okay, so this is a red blood cells and the ये red blood cells की क्या है, surface है, ये surface है. And surface के ऊपर if antigen A present, like इस form में, this is a antigen A. Okay, दिस इज़ द एंटीजन ए. सो ब्लड ग्रुप क्या होगा, योर आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन्स ए प्रेजेंट है एंड द ब्लड ग्रुप ए. ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन्स बी प्रेजेंट हो, लाइक ये. सो दिस इज द एंटीजन्स बी हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन्स बी प्रेजेंट है, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी. सो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें बोथ एंटीजन्स ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन्स बी भी प्रेजेंट है. Like one antigen A and the second is antigen B. Again antigen A, again antigens B, again antigen A, again antigen B. So the person having a blood group A, antigens A be present है and antigens B be present है on the surface of RBCs, red blood cells, and the person having a blood group O, so none of antigens A or antigens B.
because इसमें कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है. देयर इज नो एंटीजेंस present on the surface of RBCs like antigen A or antigen B. The person will have a blood group O. So next is this is all over about the antigens. Like antigens क्या about था? So the next is antibodies. What is antibodies? So after birth, two types of antibodies are produced in our body. आफ्टर बर्थ टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, जैसी बर्थ होती है तो उसके बाद जो बेबी की बेबी में टू टाइप्स की एंटीबॉडीज़ जो होती है ना प्रोड्यूस हो जाती है. लाइक वो कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है? एंटी ए एंटीबॉडीज़, and the second is anti-B antibodies. Two type of antibodies developed after birth or produced after birth in human body: anti-A antibodies, anti-B antibodies. So if a person having a blood group A, उनमें एंटीजेंस क्या है? ए प्रेजेंट है. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजेंस भी ए प्रेजेंट है, बट उनके अंदर एंटीबॉडीज़ क्या होगी? वो डिफरेंट होगी. लाइक अगर उसमें ब्लड ग्रुप पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजेंस भी ए है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्या होगी? एंटी बी एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी. लाइक ये वाली, ये किसमें? ए में. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजेंस भी हैं, लेकिन एंटीबॉडीज़ उसके ऑपोजिट है. अगर उसके सिमिलरली एंटीबॉडी आ जाए, लाइक अगर इफ़ ब्लड ग्रुप ए एंटीजेंस भी है और एंटी ए एंटीबॉडीज़ आ जाए, तो वो एंटीजन ए के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देगी, इसको फिनिश कर एंड कर देगी. लाइक एंटीजन ए हो तो ब्लड ग्रुप क्या है? देन द ब्लड ग्रुप इज़ ए. एंटीजेंस भी ए हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटी बी एंटीबॉडीज़ आर डेवलप्ड इन बॉडी. बिकॉज अगर एंटी ए आ जाएंगी ना, तो वो एंटी ए एंटीबॉडीज़ क्या होगी? एंटीजेंस को क्या कर देगी? इसके इफ़ेक्ट को क्या कर देगी? निगलेक्ट कर देगी, इसके इफ़ेक्ट को फिनिश कर देगी, एंड कर देगी. So that's why the person having a blood group A, so the antigen A is present in the surface of RBCs, and the after birth anti-B antibodies are developed in our body. So the person, if a person will have a blood group B, then antigens क्या है? B है, antigens B है, and the antibodies opposite है. Anti-A antibodies are developed. Understand? This is a blood group A and blood group B. Next आता है blood group AB. Blood group AB में the both AB antigens are present. A plus B antigens are present, but the anti-A antibodies क्या होगी इसमें? Because इसमें antigens A भी है, antigen B भी है. So इसमें anti-A antibodies और anti-B antibodies and anti-antibodies are not present
in the blood group AB, because अगर ये एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी इसके अंदर प्रेजेंट हो, एंटी ए एंटीबॉडीज़ भी इसमें प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेंगी, जो एंटीबॉडीज़ एंटीजन ए है, लाइक इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी बहुत प्रेजेंट है इन ए बी ब्लड ग्रुप में, अगर इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज़ भी आ जाए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी आ जाए, तो वो इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर देगी, इनके इफेक्ट को फिनिश कर देगी. सो इसमें क्या होगा, नो एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट इस केस में, नो एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट. So next is a blood group O. The person will have a blood group O. There is no antigens present because ऐसे ही था ना, लाइक ये वाला, इसमें कोई भी एंटीजेंस आर प्रेजेंट नहीं थी कोई भी ब्लड ग्रुप ओ में. सो ब्लड ग्रुप ओ है, नो एंटीजन, लेकिन एंटी इसमें क्या होगा, एंटी ए एंटीबॉडीज़ भी होगी प्लस एंटी बी एंटीबॉडीज़. Are also present. So this is all were about the antigens or antibodies. So next is a question arise, how blood transfusion occur in ABO blood group system. What is blood transfusion? Blood transfusion is a process of transferring blood or blood based product from one person to into another person is called blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफरिंग का फ्रॉम वन पर्सन से अनदर पर्सन में. ठीक है, एक पर्सन से ब्लड लेते हैं, लाइक डोनर से ब्लड लिया और उसको डोनेट कर दिया है उसको किस रेसिपिएंट मीन जिसको ब्लड की नीड थी. सो ये क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन से अनदर पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन process of blood transferring from one person to another person is called blood transfusion.